आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो थोड़ा सा हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के विषय में पढ़ना है। सही है। Now it's there. क्या करना है? Regarding that, what is the wavelength, what is the frequency, got it? This all. क्लास में हमने यहाँ तक कर लिया था, बट इट वाज मोस्टली मैथमेटिकल पार्ट ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल. Today we are going to discuss this about the little bit, lecture 5, that is the some important characteristics of the wave. Now when we talk about the wave, when we talk about the wave, तो wave, you can see the diagram, wave का movement कैसे होता है, like this, up down. Got it? एक
उसको जूम अगर हम कम करते हैं तो लेट्स होप little bit less zoom. We will take a new page. Now let me have a babe. वेव का जो मूवमेंट होता है दैट्स लाइक अप एंड डाउन लाइक this portion is known as crest, this is known as trough. This is the crest and this is the trough. Got it? आप एक रस्सी लेकर के ना विंडो में कहीं बांध लो उसको, रस्सी को खूब तेजी से ना जिगजैग मूवमेंट करा दो, अप डाउन अप डाउन। आप अगर कहीं पे आप सी वेव्स आपने देखा होगा, आप अगर किसी भी सी बैंक एरिया में जाओ तो विल फाइंड दैट देयर इज ना सी टाइडल्स की जो वेव होती है ना ऐसे चलती रहती है। तो दिस इज द मैक्सिमम हाइट, ये जो हाइट है ना दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। गॉट इट? ये एम्पलीट्यूड आपको नीचे मिल जाएगा। दिस इज ट्रफ and this particular part is known as crest. तो we have a peak, peak वाले पोर्शन को crest, डेप्थ जो मिलती है उसको ट्रा बोलते हैं। got it? Yes, sir. Now we need certain thing, one फैला है जैसे हमारे what is wavelength, वेव की लेंथ से क्या मतलब होता है? got it? What is wavelength? वेवलेंथ को आपको एक्सप्लेन करना है तो आपको बोलना पड़ेगा वन लेट वी हैव टू कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट आर ट्रा। got it? This is the two consecutive crest. बेटा इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी that is your wavelength. Distance between two consecutive crest. Consecutive crest or trough. Got it? इसकी Yes. यूनिट क्या होगी? either in the meter, either in the picometer, or even a micron, depend upon the length. But this is the distance. Now, second point is also very important, that is known as what is frequency. When we talk about the frequency, it is denoted by nu, N-U-E. That is the nu. Got it? And what is the frequency की अगर हम बात करते हैं तो आपको क्या करना है, आप एक बड़ा सा थ्रेड ले लो और उसको ना कहीं पे ज्वाइंट करके ना खूब तेजी से मूव करा दो। As soon as it is under the motion, ये क्या करेगा? That will be in the motion. Movement start हो जाएगा like this in up down up down. अब यहाँ पे हमें एक विंडो चाहिए, यहाँ पे हम एक ओपनिंग कर लेंगे यहाँ पे। We will see that कि how many number of baby is going to out from this point, in a particular time of interval. अब जब ऑब्जर्वर यहाँ बैठेगा उसका काम होगा कि बेब्स की काउंटिंग करना, बेब्स इसके अंदर से निकल के जा रही हैं तो नंबर ऑफ बेब पास थ्रू पॉइंट पर सेकेंड, नंबर ऑफ बेब्स पास थ्रू अ पॉइंट per second. Got it? This is known as frequency. Got it? So when we talk about the frequency is what? Frequency is 1 by time period.
frequency is 1 by time period. Got it? Frequency is equal to 1 by time period, so its unit will be time inverse या second inverse. बिकॉज आप देख सकते हो जैसे कि हमें 1 बाई टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होते हैं? वेरी गुड, डिस्टेंस बाई टाइम, डी बाई टी, और डिस्टेंस बाई टाइम हो गया. तो अगर हम डी बाई टी की बात करें, हमें यहाँ पे क्या निकालना है? पहले हम टाइम पीरियड निकाल लेते हैं. तो टाइम इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? डिस्टेंस बाई स्पीड. गॉट इट? तो स्पीड को हम किससे शो करते हैं? वी से. और डिस्टेंस को हम किससे शो करते हैं? यहाँ पे वेव की डिस्टेंस है तो वेव की लेंथ को किससे मानते हैं? लेमडा. गॉट इट? और ये वेव अगर लाइट की है तो उसकी जो स्पीड होगी उसको सी से डिनोट करते हैं. गॉट इट? ये जो हमने वेवलेंथ लिया है तो दैट इज द लेंथ ऑफ वेव. तो वेव अगर मूवमेंट में है तो वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करे? डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ और इसकी स्पीड. वर सी द स्पीड ऑफ लाइट. यू विल गेट अ रिलेशनशिप. टाइम इज इक्वल टू लेमडा बाई सी. और 1 बाई टाइम पीरियड कितना हो जाएगा बेटा? रेसिप्रोकल हो जाएगा, सी बाई लेमडा. एंड 1 बाई टाइम पीरियड को हम और क्या लिख सकते हैं? न्यू. एन यू ए. गॉट इट? फाइनली फ्रीक्वेंसी का हमने एक फार्मूला निकाल लिया बिटवीन द सी एंड लेमडा. We can have a problem on this topic. That is the question, what you will say that ki if a radiation have wavelength बोले तो बेटा क्या होगा? लेमडा. That is equal to 500 nanometer. Okay. अब you should remember, तो आपको क्या निकालना है? What will be the frequency? Then calculate its frequency. इसकी आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है. Now you know now if you see the solution how to solve it. तो आज भी नो दैट कि फार्मूला क्या है बेटा? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाई लेमडा. What see the speed of light? You should remember some fact like the c is equal to always 3 into 10 raised power 8 meter per second. This is the fixed value. Got it? You can remember it. And you also remember that 1 nanometer is equal to 10 raised power minus 9 meter. So this two data is required for calculation here. This is your simple formula relationship between what is the relationship of frequency and wavelength. So that is equal to 3 into 10 raised power 8 divided by wavelength is how much? 500 into 10 to the power minus 9 meter. और ऊपर आपका रहेगा मीटर पर सेकेंड. गॉट इट? When we solve it, you will get 3 into 10 raised power 8 divided by 5 into 10 raised power minus 7. गॉट इट? ऊपर आपका रहेगा मीटर पर सेकेंड, नीचे आपका मीटर. तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा तो फाइनल यूनिट इज गोइंग टू पर सेकेंड. गॉट इट?
So if you solve it, 5 × 5 6 जाए यानी 0.6 हो जाएगा यहाँ पे। बेटा 10⁻⁻7 को ऊपर ले जाओ तो दिस इज गोइंग टू 10⁻+7। गॉट इट। बेस सेम है यहाँ पे, देखो 10⁻7 में भी एंड इसमें दोनों में सेम है। तो फाइनली यू विल गेट व्हाट? 0.10. तो 6 × 10⁸ 8+7 15 हो जाएगा। 15 में से मैंने एक पावर यहाँ ले ली तो दिस इज गोइंग टू 14 ना पर सेकेंड। तो दिस इज योर आंसर। गॉट इट? जो द फाइनल आंसर। चलो तो हमने फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन देख लिया। नाउ वन मोर फैक्टर दैट इज नोन एज वेव नंबर। व्हाट इज वेव नंबर? So that is denoted by nu bar, NUEBR, nu bar. Nu bar, got it? Yes. So what is the nu bar? Nu bar is the reciprocal of lambda. 1/λ को nu bar के नाम से जानते हैं। तो nu bar is equal to reciprocal of lambda. So this is very simple. How you can define it? आपको क्या करना है? Take a unit length. आप एक यूनिट लेंथ ले लो और सपोज करो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दैट कैन बी टेकन एज सपोज दिस लेंथ इज गोइंग टू बी either 1 centimeter or maybe 1 meter. Got it? Now you think that ki how many number of babies form in this distance? इसकी definition क्या होगी? काउंटिंग करना है। नंबर ऑफ waves form in unit length. So this will be the definition of this nu bar or wave number. Got it? Yes. Number of waves form in unit length. Got it? Yes. Now, another topic is that after the wave number, you can see that this about the energy के बाद हम करेंगे। अभी वेव नंबर हमने सीख लिया, हमने फ्रीक्वेंसी सीख ली, हमने यहाँ पे देखा वेवलेंथ क्या होता है। गॉट इट? वेवलेंथ, लैम्डा, फ्रीक्वेंसी, interrelationship between the frequency and wavelength, we understand it. Got it? Yes, sir. And then after what is the wave number, हमने ये देख लिया। Now there is one more term that is known as spectrum. What is spectrum? When we talk about the spectrum, then what you have to say that when a light is passing anywhere, this is the light going from any source, maybe sunlight, maybe tube light, maybe CFL, कहीं से भी ले लो। Got it? और आपको क्या करना है? इसके फ्रंट में यहाँ पे क्या रख देना? प्रिज्म रख दो। As soon as light is going to pass through the prism, what will happen? It is going to split into multiple correct color. Got it? यहाँ पे आपको यहाँ पे बड़े सारे कलर मिलने वाले हैं, है ना? Like that, I can get violet. I can go indigo. Indigo तो
इंडिगो वायलेट जैसा ही मिलेगा, अप्रोक्सीमेट सिमिलर, गॉट इट। फिर उसके बाद आएगा आपका डीप ब्लू, then you will get green, then you will get yellow. Yellow. Baby, or is it? Yes, sir. You are getting yellow color. Then you will get orange, 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 orange. Exactly, we don't know what is the orange. ये तो मुझे रेड दिख रहा है ना? Yes. ऑरेंज रेड हो गया, तो ऑरेंज को हम कुछ बदल लेते हैं थोड़ा। ऑरेंज लाते हैं। ऑल अबाउट डिफरेंट कलर हमें स्क्रीन पे मिलती है। तो ये जो स्क्रीन पे आपको जो आउटपुट मिल रहा है, व्हाट एवर द आउटपुट यू गॉट ऑन द स्क्रीन, दिस इज द स्क्रीन। स्क्रीन पे जो आपको ये अरेंजमेंट मिल रहा है, दिस इज नोन एज स्पेक्ट्रम। गॉट इट? Yes, sir. तो इसकी डिफिनेशन अगर आपसे कोई पूछता है हाउ टू डिफाइन इट, आप इसको लिख सकते हो, अरेंजमेंट ऑफ different kind of electromagnetic radiations, EMR, electromagnetic radiations in increasing order of wavelength, increasing order of wavelength or decreasing order of frequency is known as spectrum. Got it? Now, how many type of spectrum is there? The two. Okay. So now we are going to discuss type of spectrum. Very good. Type of spectrum. When we talk about the type of spectrum are mainly two types. One is known as absorption and that is known as emission. Got it? थोड़े और ब्रॉड सेंस में चले जाते हैं तो थोड़ा और डिटेल भी ले सकते हो। वन स्पेक्ट्रम इज नोन एज line spectrum and that is known as band spectrum. Line spectra and band spectra. Got it? Line spectrum as well as this is the band spectrum. तो line spectrum and band spectrum. Line spectrum की what is the line spectrum? This is the spectrum of individual atom. This is the spectrum of atom. Got it? Atomic spectra. This is the spectrum of molecules. The basic difference. एटॉमिक स्पेक्ट्रा लाइन स्पेक्ट्रा के नाम से जाना जाता है। मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम निकालते हो तो दैट इज नोन एज बैंड स्पेक्ट्रम बिकॉज़ देयर इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स। Further they are going to divide in two part. One is known as emission and another is known as absorption. Very good. Emission as well as absorption की बात हम करेंगे। Now, when we talk about the emission spectrum, and what is the emission spectrum अगर हम इसकी बात करते हैं
I'm going to talk about the emission spectrum. We have a tube light like system here, and it is fitted with the electrodes in either side. One electrode is going to be positively charged and another electrode is going to be negatively charged. और आपको जिस गैस का स्पेक्ट्रम यहाँ पे लेना हो आप उस गैस को इसके अंदर भर दो. सपोज करो मैंने हाइड्रोजन गैस भर दी. एज सून एज आप करंट को पास करोगे दिस विल ब्रेक इनटू द हाइड्रोजन एटम. क्योंकि हमें कौन से स्पेक्ट्रम की बात करने जा रहे हैं, हम लाइन स्पेक्ट्रम की बात. और नाउ जो बल्ब ग्लो करेगा तो ये गैस क्या होगी, हीट हो जाएगी. जब गैस आपकी हीट हो जाएगी देन व्हाट हैपेंस, electron transition of electron takes place from lower energy to higher energy level and vice versa. और यहाँ से हमारी क्या होगा, यहाँ से रेडिएशन निकलेगी. तो रेडिएशन is coming out here. Again pass them through the prism without any hindrance. इसको prism से पास कर दो. तो this is your prism. in between में यहाँ पे आप स्लिट लगा लो. स्लिट का काम होता है जो एक्स्ट्रा लाइट आती है ना उसको रोक के रखेगा. Now same thing you will get again as we talked earlier, with Gyor. आपको यहाँ पे वायलेट चलो यहाँ पे देखो इसके बाद प्रिज्म से वायलेट कलर, देन वी कैन हैव इंडिगो, देन वी हैव ब्लू, then we have a green, like different colors you will get, then you will get orange, then you may have red. चलो now these are on the screen. या screen पे हमें आ गया, got it. So this is again emission spectrum. So how we can define it? What is emission spectrum? हमें इसको define करना है. तो this is the radiation. तो आपको क्या बोलना है कि if radiation coming from excited source directly passed through the prism. ये रिपीटिंगली स्पैम मार रहा है चैट पे. Got it? So the prism, if radiation coming from excited source directly pass through the prism, then it is known as
emission spectrum. On the radiation coming from excited source directly pass through the prism, then it is known as. सर एक्साइटेड तो इसका मतलब एक्साइटेड सोर्स का मतलब जो हमारी ये ट्यूबलाइट और बल्ब है ना, वो गर्म हो जाती है ना, हीट हो जाती है, तो उसके अंदर जो गैस है ना वो भी एक्साइटेड हो जाएगी। एंड आफ्टर द एक्साइटेशन व्हाट विल हैपन, उसके पास जो ऑर्बिट्स होते हैं ना वहां पे इलेक्ट्रॉन रहेंगे। द इलेक्ट्रॉन आर गोइंग टू जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी लेवल एंड वाइस वर्सा, गॉट इट। फिर हायर से लोअर में आएगा, तो यहाँ से रेडिएशन निकलती है, गॉट इट। तो आप यू माइट हैव हर्ड प्लाज्मा स्टेट, आप जानते हो प्लाज्मा स्टेट के विषय में। वहां पे ना बल्ब हमारी हीटेड हो जाती है, तो वहां से लाइट रेडिएशन आने लगती है, गैस हमारी ग्लो कर देती है, तो दैट इज नॉन एज एन एमिशन स्पेक्ट्रम। और सेम डायग्राम आपका रहेगा, बस उसमें हमें क्या करना है कि डायरेक्टली ना इसको हम पास नहीं करेंगे। यहाँ पे जैसे हमारा ये था, इसको हमने डायरेक्टली पास कर दिया था। नेक्स्ट केस में क्या होगा कि नेक्स्ट केस में थोड़ा सा एडिटिंग कर लेनी। एडिटिंग क्या करनी रहेगी, यहाँ पे एक तो ये डायरेक्टली नहीं आएगी, गॉट इट। इसके बीच में हमें क्या करना है, एक सैंपल रख देना है। द सैंपल सपोज करो बेटा कौन सा, दिस इज द सपोज मोल्टेन NaCl। चलो छोड़, एक सैंपल रख दिया, लाइट की रेडिएशन इससे जाएगी। फर्स्ट जैसे जैसे रेडिएशन जाएगी, तो मोल्टेन NaCl की हैव अ टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब येलो कलर। क्योंकि येलो कलर यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया, तो येलो कलर इज नॉट गोइंग टू विजिबल ऑन द स्क्रीन। आपको येलो कलर यहाँ पे नहीं मिलेगी, तो आपको यहाँ पे ना कहीं पे ना बैंड मिलेगा, मतलब डार्क बैंड मिलेगा, डार्क लाइंस, मतलब यहाँ पे येलो इज एब्सेंट। करेक्ट, येलो कलर आया नहीं। पीछे वाले में इसको हमें दिखा देना है, पीछे वाले डायग्राम में अगर आप देखना तो उसमें हमें ना येलो कलर, इफ इट इज मिस्ड आउट आप उसको शो कर देना। करेक्ट, पीछे वाले डायग्राम में येलो कलर रहेगा, बिग जी वही है ना, यहाँ पे एक येलो रहेगा। तो यहाँ पे एक कलर एब्सेंट है। कलर का ये जो स्क्रीन की कलर हो, ब्राइटनेस उतनी ज्यादा नहीं रहेगी, जैसी पहले की ब्राइटनेस थी उससे थोड़ी कम हो जाएगी। बट नाउ दिस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ऑलराइट, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो गया। एक्सप्लेन कैसे करेगा हुआन। रेडिएशन coming from excited source, coming from excited source first passed through absorption sample absorption sample, then prism. So then it is known as
absorption spectrum. Got it? Now, how to calculate the energy, you know? तो हमने यहाँ पे देखा ये this is the nucleus, this is the K cell, this is the another cell. Got it? Let you are going to, there is a, you know, some radiation is going to emit. इलेक्ट्रॉन इज सिटिंग हियर, इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा है, यहाँ से यहाँ आया. अच्छा, ऐसा कभी नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन आपका ना, आपने उसको हीट कर दिया, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया, वहीं बैठा रहे. तो आपका बर्थडे मान लो है और आपको अपने पेरेंट्स से पैसे मिलते हैं, तो ऐसा नहीं होता हम उसको पैसे को ना ले जाके मनी बैंक में डिपॉजिट कर दें और अपने लाइफ के बेसिस में सोचें अगले 100 साल बाद ये पैसा कितना बड़ा हो जाएगा. बल्कि वी यूज टू मेक अ प्लान टू कॉल आवर फ्रेंड्स. हम अपने दोस्तों को बुलाते हैं और पार्टी देते हैं, और तब तक हमारी बॉडी ना मूड एक्साइटेड स्टेट में रहता है, जो सारा पैसा ना खत्म ना हो जाए. अगर उन्होंने 5,000 रुपए दे दिया तो हम 5,000 रुपए खर्च कर लेते हैं. तो ऐसा कभी नहीं होता कि मेटल को आपने हीट कर दिया वो हमेशा के लिए हीट रहे. इट इज गोइंग टू लॉस इट हीट्स इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन. सिमिलरली, तो एनी एटम कैन नॉट बी इन एक्साइटेड स्टेट फॉर ए लॉन्गर टाइम इंटरवल. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर हायर स्टेट में है तो इसको बैक टू पवेलियन जाना ही जाना है. ये 10 जूल है, मान लो 20 जूल है, ये वापस जाएगा, व्हाट, बैक टू पवेलियन जाएगा, तो यहाँ रेडिएशन निकलेगी. दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा ई. अब एनर्जी का एक फार्मूला होता है, उसको याद करके रखो, दैट इज E इज इक्वल टू एच न्यू. दिस वाज गिवन बाय साइंटिस्ट, हिज नेम इज प्लांक. व्हाट इट, प्लांक क्वांटम. तो इसको आगे आएगा भी वैसा, लेकिन ऐसे न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई लेमडा. पीछे हमने अभी पढ़ा. यू कैन अप्लाई हियर एट दिस प्लेस, यू नो, दैट शुड बी एच इनटू सी बाई लेमडा. Got it? So this is for numerical portion. And one more formula is here to calculate the directly wavelength. So that is equal to 1 by lambda. That is equal to RH. RH को हम बोलते हैं Rydberg constant. Rydberg constant. इसकी वैल्यू होती है 109677 into Z square multiply by 1 by N1 square in one inside the bracket minus 1 by N2 square. This is the big one, you know, per centimeter. Got it? Lambda is the wavelength, R is the Rydberg constant, and N1, N2 is the cell number, Z is the atomic number.
Now you can see that how much part we have done here. ये पोर्शन ये वाला पेज हमने किया. C, speed of light, and wave number, amplitude, what is the electromagnetic radiation. क्वालिटी यहाँ पे हमें देख रहे थे कि रेडियो वेव्स, ये वाला पॉइंट हमें याद करके रखना है कि समटाइम द क्वेश्चन केम इन द एग्जामिनेशन. चलो, ये फार्मूले हम सारे डिस्कस कर चुके थे. वेलोसिटी, वेव नंबर, एम्पलीट्यूड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. यहाँ पे डेटा है, ऑर्डर दिया, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल एंड दिस आफ्टर दैट आप देख सकते हैं यहाँ पे. ये हमें ना ट्रेंड याद करके रखना है. व्हाट इज ऑर्डर? कॉस्मिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, देन गामा रेज, देन एक्स रे, देन अल्ट्रावायलेट. तो आप इसको याद करने की कोशिश करोगे. तो जस्ट इसमें कोई इसके को शॉर्टकट कुछ बना लेना. गॉट इट? शॉर्टकट बन पाएगी? कॉस्मिक, गामा एंड एक्स. कॉस गैमेक्स है ना जी, ये तो गामा रेडिएशन है. एंड देन यूवी, कॉस गैमेक्स, कॉस गैमेक्स है ना, ऐसे कॉस गैमेक्स यूवी इन माय रूम, ऐसे याद कर लो, है ना. कॉस गैमेक्स, कॉस गामा, कॉस गामा एक्स, कॉस गामा एक्स, यू वी, यानी तुम और मैं, कुछ भी लिख लो, इन माई रूम, है ना. किसी का नाम लिख सकते हो, सी से और जी और एक्स से किसी का नाम याद करो. कॉस गैमेक्स, तो गामा एक्स लिखा है तो इसको कुछ ऐसे पढ़ना पड़ेगा, गामा और एक्स, यू एंड बी, यानी यू विन से अल्ट्रा वायलेट, एंड विजुअल उसको अलग अलग पढ़ना, यू से अल्ट्रा वायलेट पढ़ना, बी फॉर विजुअल पढ़ना. यू एंड वी इन माई रूम. व्हाट इट, ऐसा मतलब कुछ सेटिंग बना लो सो दैट यू कैन रिमेंबर इट. और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल, आप इसको देख सकते हो, देखो बन जाएगा. What is the ratio between the energies of the two radiation? One of the wavelength 6000 angstrom and the absorbing 2000 angstrom. तो उनकी एनर्जी का रेशियो बताना है. तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है और हम इसको देखते हैं कैसे ले चलते हैं. गॉट इट? तो ये आप सोच सकते हो क्या करना होगा. वेवलेंथ से एनर्जी कैसे निकालते हैं ये हमें सोचना है. गॉट इट? यू हैव टू रिमेंबर दिस, हाउ टू सॉल्व energy problem by using the wavelength. Okay, now we can see that I can see that question. Or the question is that ki lambda is given, one lambda can be taken as 6000 angstrom and another lambda 2 can be taken as 2000 angstrom. हमें एनर्जी बताना, इसके एनर्जी को बेटा कर लेना E1 कंसीडर कर लेना, इसकी एनर्जी को E2 कंसीडर कर लेना.
And as I know that energy is equal to H into C by lambda. Got it? इसको याद करके रखना है. Where H is the Planck constant, we know already. H is a Planck constant, जो बहुत ही छोटा सा वैल्यू है, बट ये बड़ा वैल्यू है देखने में लगता है. इसकी वैल्यू होती है 6.626 into 10 power minus 34 joule second. So, and see the speed of light, that is the common. C हमें पहले से मालूम है, that is 3 into 10 power 8 meter per second. So these are the constant, ये भी constant है. तो simply go and work on formula. E1 is equal to लिख लेना H into C by lambda 1, because H and C you cannot change here. Got it? H and C both are constant. Another case E2 will be taken as HC by lambda 2. हमें इनका रेशियो बताना है, तो हमें क्या करना है बेटा, इसको डिवाइड कर दो. न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर उड़ जाएगा. This will be 1 and this will be 1. What is the formula? E1 by E2 is equal to lambda 1 by lambda 2 आएगा या lambda 2 by lambda 1? lambda 2 by lambda 1 आएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल है ना. एनर्जी से देखो वेवलेंथ नीचे जा रहा है ना, नीचे अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए. तो lambda 2 by lambda 1 आएगा, और मैंने यहाँ पे lambda 2 ही लिख दिया, इसको हटाना है. दिस इज द lambda 1. गॉट इट? तो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट हियर, एनर्जी का रेशियो निकालना है. दिस इज द रेशियो. तो lambda 2 कितना दिया है? आई होप यू रिमेंबर 5000. नहीं 2000 है ना बेटा. देखो यहाँ 2000 मैंने लिखा हुआ है. 2000 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 6000. कट गया 1/3. Got it? This will be your answer. This will be your answer. Now, when we talk about the emission spectrum of hydrogen atom. Emission spectrum of hydrogen atom की अगर हम बात करेंगे, तो there is a group of scientists who did the study, you know. There is a group of scientists who did the study. The group of scientists what? आप उसको याद करोगे. One is known as Lyman. Got it? Another is known as Balmer. Another scientist known as Paschen. And another scientist known as Brackett. Next. So next scientist name is Pfund. The last one is Humphrey. One bit ago, the Lyman series, Lyman has said that Lyman ki beta N1 kya thi? That was the fix. That was the one. And N2 is how much? More than one. N2, 3, 4. That's up to infinity. Varma series की बात करते थे, N1 can be 2. But N2 should be. When we talk about the Paston series, N1 is equal to 3.
गॉट इट। यहाँ पे n1 इज इक्वल टू 3. 3, बट n2 इज इक्वल टू 4. मोर देन दैट। हाँ यार, 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। सिमिलरली आप यहाँ सबका n1 फिक्स है, सबको जो टास्क दिया गया, लाइक सपोज यू हैव मेनी फ्रेंड्स, है ना। कभी कभी स्कूल में होता था ना, प्रोजेक्ट वर्क या काम दिया जाता है ना, तो आपके फ्रेंड्स को अलॉट कर देते थे किसको कहाँ पे अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी है। In this case, n1 is equal to 4, but n2 is going to be 5, 6, 7, dash dash up to infinity. Yeah, the n1 in case of p4 is 5, and then n2 will be equal to 6, 7, 8 up to infinity. Similarly, hum n1 is equal to and n2 is equal to 7, 8, 9 dash dash up to infinity. Got it? Yes, sir. This is all about your emission spectrum of hydrogen atom. तो लाइमन का क्या कमेंट था? लाइमन सेड दैट कि जब भी ये प्रॉब्लम आती है, जब भी ये ट्रांजिशन होगा, one number the electron is coming from any state to the K cell, तो वहां पे जो रेडिएशन आती है उसका नेचर जो होता है दैट इज यूवी रेज। अगर आपके दिमाग में आता ना कि हवाई द सनलाइट से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्यों आती है ना, हमने बहुत सारे बच्चे आजकल ना बहुत सारे क्रीम्स लगाते हैं ना, फेस मॉइस्चराइजर, Yes, sir. अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्शन लगाते हैं, धूप में Okay. जाएंगे तो क्या हो जाएगा ना, लाइक दैट। तो कहीं ना कहीं दिस रेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस रेज इज देयर, यू नो। अगर हम ऐसा कोई क्रीम बनाएं कि यूवी रेज हमारी स्किन को ना इफेक्ट करे, तो हम बहुत पैसे कमा सकते हैं। गॉट इट? दिस इज द रिसर्च पार्ट। अब लेकिन यूवी रेज आती कहाँ से? तो उनका कहना था फ्रॉम एनी ऑर्बिट, वन ओवर द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग टू द के सेल। अगर वो इलेक्ट्रॉन के सेल में गया, फर्स्ट सेल में गया, तो यूवी रेडिएशन आनी आनी है। सेकेंड इज द विजिबल, जो हमें दिखता है, वॉट एवर विजिबिलिटी यू हैव, यू नो, तो विजिबल रीजन, तो ये हमारा बिकॉज ऑफ दिस, you know, what second orbit, whenever electron goes from 3 to or 2 or maybe 4 to 2, will be visible. In all other cases you will get infrared only. इंफ्रारेड आप देख सकते हो ज्यादा हो रहा है, इंफ्रारेड का मतलब हीटिंग, रेस्ट का मतलब यहाँ पे हीटिंग का काम करेगी। इसको याद करने की कोशिश करो। यू हैव टू रिमेंबर लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट पी4 हम्फ्री, फिंगर्स पे से लिखने ना, लाइमन बामर, है ना, लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट पी4 हम्फ्री, 1 2 3 4 ऐसे याद कर लो। लाइमन 1, बामर 2, पास्चन 3, लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट पी4 हम्फ्री, लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट पी4 हम्फ्री। तो ये 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट you can remember this natures. The Lyman series are always in UV rays. Balmer is visible. All other are in infrared. All other are in infrared. Got it? Yes, sir. चलो यहाँ तक कर लो, so that we will start tomorrow on this topic. ये टॉपिक इसको याद कर लेना, तो you should be ready for the doubts at this session. Got it? Have a nice day. Thank you, sir. Good day. Got it? और रिवाइज करने के लिए दोबारा से चैनल पे, हम यूट्यूब वाले चैनल को मैं Yes, भेज दूंगा। भेजा था मैंने? no, sir. नहीं, चलो आज मैं भेज दूंगा, so that you will repeat, है ना, the topics again and again. If you want to see, you can see again. Okay. Okay.